Hello everyone, so let's continue our discussion on vector algebra, and in this lecture we will be doing exercise 10.4. So like always, notes will be available as a Google Drive link below the video. Okay, so let's continue. So this is the exercise on cross product. So find the mod of A cross B if A vector is given and B vector is given. Let's find first A cross B vector. A cross B vector will be defined as the determinant of I cap, j cap, k cap, and we have to put all the vector components, so scalar components here. So I so A vector का के components are 1, minus 7 and 7, and B vector के components are 3, minus 2 and 2. So let's open this determinant. We get I cap times minus 7, 7, minus 2 and 2, then minus sign, then j cap के साथ में we get 1, 7, 3 and 2 plus k cap, with which we get 1, minus 7, 3 and minus 2. Opening this we get I cap के साथ minus 14 plus 14, j cap के साथ में 1 into 2 is 2, minus 21 plus k cap, and इसके साथ में numbers are minus 2 plus 21. So this comes out to be 0 I cap, and then minus 19 and minus of that, so plus 19 j cap and plus 19 k cap. Now let's find magnitude of A cross B. So we have to take magnitude of the above जो हमने वेक्टर कैलकुलेट किया उसका. So 0 square plus 19 square plus 19 square. So what is 19 square? So 19 square 1, 8, 9, 7, 19, 1, 6, 361. So it is square root of 361 plus 361. So we do not need to do that. We can just take 19 square common from the square root, right? So let's do it directly. So 19 बाहर आया, अंदर क्या बचेगा? So it is twice of 19 square. 19 square goes outside. It is 19 root 2. Okay. So let's check our answer from the back side of the book. So पहले क्वेश्चन का आंसर है 19 root 2. Okay, now let's do our second question. Find the unit vector perpendicular to each a plus b and a minus b. Okay, so a vector perpendicular, let's say ये u vector है and ये v vector है, इन दोनों से perpendicular vector will be, so vector perpendicular to u vector and v vector क्या होगा? Plus minus u cross v, right? So u cross v gives you a vector which is perpendicular to u vector and v vector. So let's apply this. So पहले हम क्या निकालेंगे? A plus b vector निकालते हैं. So a plus b vector, it is 3 plus 1 I cap plus में 2 plus 2 j cap plus 2 minus 2 k cap, 4 I cap plus 4 j cap plus 0 k cap. Now let's find a minus b vector.
A minus B vector is 3 minus 1 I cap प्लस में 2 minus 2 j cap प्लस में 2 plus 2 k cap, which comes out to be 2 I cap plus 0 j cap plus 4 k cap. So vector perpendicular to A plus B vector and A minus B vector, जिसको मैं बोल रहा हूँ C वेक्टर, क्या होगा ये A plus B वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट with A minus B vector. Of course plus minus, let's find this result first. So C vector कितना आ रहा है? So I cap, j cap, k cap. Let's write the components of A plus B vector. A plus B vector के components क्या आ रहे हैं? So 4, 4 and 0, and here components are 2, 0, 4. So C vector is I cap times 4, 0, 0, 4 minus j cap times 4, 0, 2, 4 plus k cap times 4, 4, 2, 0. So C vector is 16 minus 0 and minus j के साथ में 16 minus 0 plus k cap के साथ में 0 minus 8. So C vector is 16 I cap minus 16 j cap minus 8 k cap. अब हमें क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ C वेक्टर. So let's find magnitude of C first. Magnitude of C is square root of 16 square plus minus 16 square plus minus 8 square, which is 256 plus 256 plus 64. So this, which is 512 plus 64, which comes out to be 576. Square root of 576, and 576, I think it's a perfect square. किस चीज़ का perfect square है? So square root method use करते हैं. Let's say 5, या फिर factorize भी कर सकते हैं, but let's say use square root method. So 2 into 2, 4, 176, and then 2 का double here is 4. 4 into, let's apply 4 here. So 4, 4, 176. Okay. So we get it is 24. So C cap now can be defined as C vector divided by magnitude of C vector, which is 16 by 24 I cap minus 16 by 24 j cap minus 8 by 24 k cap. Which is 2/3 of I cap minus 2/3 of j cap minus 1/3 of k cap. So I will define unit vector perpendicular to A plus B and A minus B as plus minus C cap, क्योंकि the direction can be let's say in the direction of A plus B cross A minus B, or in the negative of that also. So our result is plus minus 2/3 of I cap minus 2/3 of j cap minus 1/3 of k cap. Let's check this answer. Here plus minus 2/3 minus plus 2/3 and minus plus 1/3. So you can multiply plus minus inside to get this result, right? Plus minus 2/3 I cap, and plus into minus is minus, and minus into minus is plus. So it will become minus plus 2/3 j cap and minus plus 1/3 k cap. Okay. So let's move to our next question.
If a unit vector A makes pi by 3 with I cap, pi by 4 with J cap, and acute angle theta with K cap, find theta and hence find the components of A vector. So unit vector का क्वेश्चन है. So हमने पहले ही डिफाइन किया हुआ यूनिट वेक्टर A cap. So this is a unit vector. So आप cap भी लिख सकते हैं, right? और A cap is defined as Li cap plus Mj cap plus Nk cap. So these are the direction cosines, right? Basically cos alpha I cap plus cos beta J cap and cos gamma K cap. And we have one more relation. So one more relation is L square plus M square plus N square is normalized, so its sum is 1, right? So cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is 1. हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है एंगल इट मेक्स विद आई कैप इज, सो बेसिकली अल्फा कितना है पाई बाय 3, बीटा कितना है विद जे कैप इट मेक्स एंगल पाई बाय 4, एंड वी हैव टू फाइंड गामा, बट गिवन क्या है गामा इज एक्यूट, राइट? गामा इज एक्यूट. ओके, सो हमारा यूनिट वेक्टर विल बी डिफाइंड एज कॉस ऑफ पाई बाय 3 आई कैप प्लस कॉस ऑफ पाई बाय 4 j cap plus cos of gamma, which we do not know, gamma हमें calculate करना है k cap. So this is pi by 3, cos pi by 3 is half I cap plus 1 by root 2 j cap plus cos gamma k cap. Let's put the values here. So in the second equation, so cos square alpha कितना होगा हाफ स्क्वायर प्लस 1 by root 2 स्क्वायर प्लस cos gamma square is 1, so 1/4 plus half plus cos square gamma is 1, so cos square gamma is 1 minus, तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है हाफ और 1/4 का, it is 3/4, and we find cos square gamma is 1/4. So sorry if it was hidden, but you can see it now. So हमें cos square gamma पता चल गया, and cos gamma कितना आ रहा है, cos gamma is plus minus half. Let's see, cos gamma is equal to half और cos gamma is equal to minus half. इसमें से एक रिजल्ट हम निगलेक्ट कर देंगे, कौन सा, ये वाला, बिकॉज यहाँ पे गामा क्या आ रहा है, ऑप्टियूज आ रहा है. हेयर गामा इज कमिंग आउट टू बी 3 पाई बाय 4 विच इज 135 डिग्री. ऑप्टियूज एंगल है, तो वी विल निगलेक्ट दिस आंसर, एंड सो वी गेट गामा कितना आ रहा है कॉस, sorry I wrote 3 pi by 4 which is wrong, right? So let's correct that. So cos theta half कब होता है, so गामा यहाँ पे कितना आ रहा है pi by 3, and यहाँ पे you can write trigonometric equation as cos gamma is minus of cos pi by 3, and you can write cos gamma is cos of pi minus pi by 3, which is 2 pi by 3. Gamma is 2 pi by 3, but it is obtuse, right? Okay, ये क्या है, obtuse angle, so we can neglect this answer. This is the acute angle, right? So this is our correct result. Gamma is pi by 3, acute angle. Let's check the answer. So answer is pi by 3. So there is a second part to the question. So second part to the question says find the components of a vector. So क्या आएंगे components a vector के? So a vector हमने अभी भी कैलकुलेट किया था ऊपर. Let's mark it as 1. So it is half I cap plus 1 by root 2 j cap plus cos gamma k cap
cos gamma is half k cap. So this is a vector and components of a vector are, so scalar components लिख रहे हैं, components of a vector क्या आ रहे हैं? So these are half 1 by root 2 comma half. So that must be the second part of the answer. Let's check that also. So second part of the answer क्या आ रहा है? Half 1 by root 2 and half. Okay. So let's continue with our discussion. Okay. So show that a minus b vector का cross product with a plus b vector is twice of a cross b. So which is weird result, but let's see. So so let's start with LHS. LHS is a minus b का क्रॉस प्रोडक्ट विद a प्लस b वेक्टर. सो इनको मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट 4 पार्ट्स. फर्स्ट विल बी a क्रॉस a, देन a प्लस में a क्रॉस b, माइनस में b क्रॉस a एंड माइनस b क्रॉस b. वी ऑलरेडी नो a क्रॉस a वेक्टर कितना होता है, नल वेक्टर, right? Because let's see, a क्रॉस a किसके इक्वल होगा, mod a and sine of the angle between them, which is 0, sine 0 is 0 into n cap, and the result is null vector, right? So this becomes null vector and this becomes null vector. Any vector plus a null vector is the vector itself, so it is a vector itself. So we can neglect these two and we get a plus b vector, sorry, a cross b vector minus में b cross a vector, and these two will not cancel out this time because we already know a cross b vector is equal to negative of b cross a vector. इन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है. So we can replace a cross b, sorry, b cross a with negative of b cross a with एक positive a cross b, and हमारा RHS. So now we have our RHS. So you can always put your formulas in a box. So formula 1, formula 2, formula 3, and twice of a cross b is our result for this, and which is the RHS. Okay, so let's go to next question. So we will do this question in at least 2 ways. So पहला तरीका, you can do it forcefully, and forcefully you can calculate the cross product of these two vectors and equate it to null vector and solve some equations for lambda and nu. But there is a very simpler way also. So पहले forcefully करते हैं. अच्छा कि भाई इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ रहा है, लेट्स कॉल दिस वेक्टर एज a vector and this vector as b vector. So a cross b is given to be null vector, but a cross b किसके इक्वल है, so it is I cap, j cap, k cap, and components लिखेंगे a vector के, which are 2, 6, 27 and 1 lambda and mu. So from this is equal to null vector. So I cap के components आ रहे हैं 6, 27 lambda mu. J cap के components आ रहे हैं so negative j and 2, 27, 1 and mu plus k cap, and इसके components क्या आ रहे हैं 2, 6, 1 lambda
and this is equal to null vector, right? It is not 0, it is null vector, right? So it is 0 I cap plus 0 j cap plus 0 k cap. And if two vectors are equal, their components are also equal, right? So let's simplify the LHS first. We get 6 nu minus 27 lambda I cap, then 2 nu minus 27 j cap, and then 2 lambda minus 6 k cap. This is equal to 0 I cap plus 0 j cap plus 0 k cap. So simpler will be to compare components of j cap. J cap के components है, I can write then equation minus 2 nu plus 27 is 0. So I get nu is equal to minus 27 by 2. And k cap के components है, I can write an equation 2 lambda minus 6 is also 0. So lambda is 3. And we can check that कि ये भी 0 आ रहा है कि नहीं, कि I cap के component में check करते हैं. So 6 times, so 6 nu minus 27 lambda कितना होगा? So 6 times minus 27 by 2 minus 27 times lambda, which is 3. So 3. So minus 81 and so this is plus 27 by 2. So plus, so this is plus 81 minus 81, which is 0. Okay. So which satisfies कि this is a null vector, right? So हमें lambda और nu मिल गया. This is method 1. So ये थोड़ा लंबा मेथड हो गया. There is a much shorter way. अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है या स्कूल एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, you will not do the question like this. So let's do a method 2. 2 लाइन का हो जाएगा वो. So remember, if A cross B is null vector and vector A is not a null vector and vector B is not a null vector, because you can see vector A null है नहीं है, right? It is 2, 6 and 27, and vector B भी null नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 I cap तो है, at least lambda nu चाहे बाद में 0 है, but it doesn't matter, it is not null, right? Then what is the implication of this? This means A and B are collinear, right? A and B vector are collinear. कि the angle between them will be 0 or pi, right? So they will be like this or they will be like this, right? You can always check this. So this is very very important that you remember this, but you can check this and check करके देख सकते हो. A cross B will be magnitude of A, magnitude of B, and sine theta n cap. It is null vector. So if it is null vector, so sine theta must be 0, right? Okay, sine theta must be 0. You can find the magnitude of this and you can find sine theta must be 0. And sine theta 0 होगा, इसका मतलब क्या है? Theta is 0 or pi, right? Okay, 0 radians or pi. Okay, so which means two vectors are collinear. Okay, so let's use this. So if two vectors are collinear, collinearity का condition क्या होता है? So if two vectors are collinear, we should be able to write A vector या फिर B vector can be written as lambda times A vector, right? बस scaling ही तो हुआ है, right? So lambda की जगह let me use some other lambda question में use हो रहा है. So let's use some other constant. Let's say k use कर लेते हैं, ठीक है? Some constant times. So k times. So B vector or it doesn't matter, आप किसी को भी scale कर सकते हो, right? You can write also A vector can be written as some k times B vector also, it doesn't matter. बस क्या है, scale हुआ है, right? You can also write A vector is equal to k times B vector. So this is the condition for collinearity. अगर दो vectors collinear है, this is the condition. So A vector कितना है? 2 I cap plus 6 j cap plus 27 k cap, right? And this is equal to k times, so B vector, so this is k times I plus lambda into k times j. So
के कैपिटल यूज कर रहा था मैं, सो दैट इट डज नॉट कंफ्यूज, आई डू नॉट कंफ्यूज इट विद के कैप. सो के एंड के लैम्डा प्लस के म्यू के कैप. So let's compare these two. So from I cap के coefficients I can say k कितना है. अब यहाँ से भी देख सकते हो राइट, मैं इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इट विल बिकम 2i राइट. सो दैट इज द रिलेशन राइट. सो I cap के coefficients I can say k is 2 राइट. सो if k is 2, so j cap के coefficients है, अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि 6 is equal to k times lambda. So 2 times lambda, lambda कितना आ रहा है, 3 आ रहा है. एंड के कैप के कोएफिशिएंट्स है आई कैन से कि 27 किसके इक्वल है. सो के इज 2, सो 2 म्यू एंड दिस implies म्यू इज 27 by 2 and you get the same result but much less calculation right. So 27 by 2 mu का value and lambda is 3 right. So you can do this question without even solving anything right. if the cross product is 0 इसका मतलब ये कोलिनियर है, तो इसका मतलब ये स्केल्ड है. तो अगर यहाँ पे 2 की जगह 1 आ रहा है, तो एवरी वेक्टर इज डिवाइडेड बाय, सो यहाँ पे हर कंपोनेंट को 2 से डिवाइड करना है राइट. दैट इज द स्केलिंग राइट. ठीक है. सो 2 को 2 से डिवाइड किया आई गेट 1, 6 को 2 से डिवाइड किया आई गेट 3, 27 को 2 से डिवाइड किया आई गेट न्यू की वैल्यू 27 by 2 which are these results right. So for a MCQ question or even in school exam you can use this because this all is in NCERT right. A cross B null vector कब होगा, जब वो कोलिनियर है. कोलिनियरिटी का कंडीशन क्या है, A vector is equal to K times या lambda times B vector right. And done. So this method too I highly recommend because this does not क्योंकि अब इसमें आपको कुछ सॉल्व नहीं करना, आपको कोई क्रॉस प्रोडक्ट नहीं निकालना. दिस इज मच शॉर्टर. आप इसको क्वेश्चन को देख के भी आंसर बता सकते हो क्या होंगे वो components. Let's move to next question. So given that A dot B is 0 and A cross B is null vector, what can you conclude about A and B vector? तो components के बारे में नहीं पूछा, we'll use vector definition. So A dot B is 0. It means magnitude of A, magnitude of B into cos of the angle between them must be 0. So it implies either A vector is 0 or magnitude of B vector is 0 or cos theta is 0. Cos theta कब 0 होता है? Well, dot product is 0 when two vectors are perpendicular right. So theta must be pi by 2 right. Okay. So let's see. And A cross B 0. So A cross B is a null vector right. So which means magnitude of A cross B कितना? Magnitude of A cross B is 0 which is magnitude of null vector. So magnitude of A, magnitude of B into sine of the angle between them is 0. So it says magnitude of A is 0 or magnitude of B is 0 or sine theta is 0, which implies theta is 0 or pi. So third condition is not matching right. So अगर दोनों condition true है, A dot B भी 0, A cross B भी 0 है, तो it means one of the vectors must be 0 right. So both of these conditions imply कि magnitude of A is 0 और magnitude of B is 0. कोई एक ना एक 0 होना पड़ेगा या. So that means A vector is null vector or B vector is null vector. So let's check our answer. So one of the vectors has to be null vector to satisfy this condition. So this is question number 6. Question number 6 का आंसर है either A is 0 or B is 0. Okay. Let's move to question 7th. सो हमें वेरीफाई करना है, हमारे पास ए वेक्टर के कंपोनेंट्स गिवन है, बी वेक्टर के कंपोनेंट्स गिवन है, सी वेक्टर के कंपोनेंट्स गिवन है. वेरीफाई या फिर शो दैट. तो एलएचएस से स्टार्ट करते हैं. एलएचएस इज
A का क्रॉस प्रोडक्ट विद B plus C. So let's find B plus C vector first. So B plus C vector will be nothing but B1 plus C1 I cap, x को I के components को ऐड किया, B2 plus C2 J cap and plus B3 plus C3 J cap. So this becomes, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, ए एंड बी वेक्टर का. सो ऐसे क्रॉस नहीं लिखेंगे, वी विल जस्ट राइट द बेसिक डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ द डिटर्मिनेंट. सो ए वेक्टर से यहाँ पे आएगा आई कैप, जे कैप, के कैप, राइट. फिर पहले वाले वेक्टर के कंपोनेंट्स विच आर a1, a2 एंड a3 एंड b प्लस c वेक्टर के कंपोनेंट्स विच आर b1 प्लस c1 एंड b2 प्लस c2 and b3 plus c3. And we do not need to open this to solve this question using properties of determinant. Okay, using properties of determinants, we can write this determinant as sum of two determinants, and we can split our last row. So let's keep two rows same. So I cap, j cap, k cap remain same. Let's say our second row also remains same, a1, a2, a3, and this is a1, a2, a3, and we will split our last row. So b1, b2, b3, and let's bring c1, c2, c3 here. So this is from your chapter determinants. And what is this first determinant? ये पहला determinant क्या है? This is A cross B, right? And second determinant is A cross C, and which is the RHS. So hence proved. So determinant के properties से हमने इसको prove किया. Very simple question. तो ये पहले बोल रहा है कि if A vector is null और B vector is null, then A cross B. So if, and then condition है. So if A vector is equal to null vector and or या फिर right B vector is equal to null vector, then A cross B is null vector. हाँ ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि if you can look at the RHS which is A cross B, it will be nothing but magnitude of A, magnitude of B, sine of the angle between them into n cap. अगर A null है या B null है तो इनमें से कोई एक टर्म तो जीरो होगा, राइट. तो this result will be null vector, right. ठीक है, that's true. So this statement is true, but is the converse true? And justify the answer. So inverse क्या होगा? If A cross B is null vector, then so A cross B is null vector, then will magnitude of A will be 0 या फिर magnitude of B will be 0? Is this necessary? Let's check that. So given condition को check करेंगे which you already know exists. So given condition के A cross B is 0. So this implies magnitude of A cross B is 0. तो अगर A cross B null vector है तो this is 0, which is magnitude of A, magnitude of B, and sine of the angle between them is 0. And this does not give only two conditions, this gives three conditions, right. अभी पिछले क्वेश्चन में भी किया था, magnitude of A is 0 और magnitude of B is 0 और sine theta is 0, which implies theta can be 0 or pi. So this statement becomes, so this is false, right. इसको ट्रू होने के लिए यहाँ पे हमें एक और कंडीशन डालना पड़ेगा कि थीटा मस्ट बी 0 और पाई या फिर साइन थीटा इज 0, राइट. ठीक है. सो वी हैव जस्टिफाइड आवर आंसर. सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू सिंस थर्ड कंडीशन कैन बी ट्रू कि बोथ ए एंड बी वेक्टर कैन बी कोलिनियर, राइट. तो दिस इज द कोलिनियरिटी कंडीशन की एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 0 और पाई, राइट. ठीक है. सो और इसको ट्रू होने के लिए, सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स
since A cross B vector can be null vector if A and B are collinear, right? Even if A vector is not null, right? Even if, so A vector is not null and B vector is not null, right? Okay. So it says justify your question with an exam. So result with an example also. So example दे देते हैं. So let's write two vectors which are not null, and we'll prove that their cross product is a null vector, right? Okay. Example. So with a different color. So example. तो दो कोलिनियर वेक्टर बना लेते हैं. एक बना लेते हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. एक दूसरा बना लेते हैं लेट्स से ट्वाइस ऑफ आई कैप, ट्वाइस ऑफ जे कैप, ट्वाइस ऑफ के कैप, राइट? ठीक है. ए वेक्टर बी वेक्टर. सो हियर A vector is not null, right? And B vector is not null. Okay. But A cross B 0 आ रहा है. Is it null vector? So A cross B is कितना आ रहा है? I cap, J cap, K cap. 1, 1, 1 and 2, 2, 2. Since these two rows are proportional, the determinant is 0. Correct. Or you can take 2 outside, right? I, J, K. मेरे को open भी करने की जरूरत नहीं है, right? 1, 1, 1, 1, 1, 1. So R2 is equal to R3. That means determinant is 0, right? So this is 0 I cap plus 0 J cap plus 0 K cap, or a null vector. So all it required was दो null vector. अगर दो vectors null नहीं है, even if they are collinear, then the cross product will be null vector, right? So ninth question है कि इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है. सो we'll draw a rough figure. It doesn't matter आप ABC कहाँ पे चूज करते हैं. So A, let's say B is here and C is here. And we have already defined कि area of triangle हम कैसे निकाल सकते हैं. We can define any two vectors. Let's define AC and AB vector, and we can define area of triangle ABC as half of magnitude of, let's say, AC cross AB, right? So let's find AC vector. So A के coordinates है 1, 1 and 2. C के coordinates है 1, 5 and 5. B के coordinates है 2, 3 and 5. So AC vector comes out to be, final point C है, so 1 minus 1 I cap plus 5 minus 1 J cap plus 5 minus 2 K cap. So AC vector is 0 I cap plus 4 J cap plus 3 K cap. A B vector निकालते हैं. तो final point B है, final minus initial, so 2 minus 1, so I cap plus 3 minus 1 J cap plus 5 minus 2 K cap, which is I cap plus 2 J cap plus 3 K cap. Okay, so now let's find AC cross AB. So AC cross AB vector will be determinant of I, J, K,
components of AC vector which are 0, 4, 3, components of AB vector which are 1, 2, 3, and this is I cap के साथ में 4, 3, 2, 3, J cap के साथ में, so negative J cap के साथ में 0, 3, 1, 3, K cap के साथ में 0, 4, 1, 2, which is I cap के साथ में 12 minus 6, माइनस J cap के साथ में 0 minus 3, K cap के साथ 0 minus 4, and the result is 6 I cap plus 3 J cap minus 4 K cap. So area of triangle ABC, let's call this 1. अब हमें क्या निकालना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी क्रॉस ए बी, राइट. सो हाफ ऑफ इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ, so this is I'm doing from 1, 6 square, 3 square and minus 4 square, 6 square, 3 square and minus 4 का square, so in the bracket, right. So half 36, 9, 16, so 36 plus 25, 1, 61, square root 61. So result is square root 61 divided by 2 square units. So this is the area of the triangle, and अपना आप क्वेश्चन हेरॉन्स फार्मूला से भी चेक कर सकते हैं, बट उसमें आपको डिस्टेंसेस निकालने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा. दिस इज मच सिंपलर. सो square root 16 by 2. Let's move to next question. So only few questions are left before miscellaneous, so let's complete them. So find the area of the parallelogram whose adjacent sides are determined by these two vectors. So दो adjacent side given है, A let's say and B, right. ठीक है, A vector and B vector, and हमने last lecture में define किया था area of the parallelogram, right. Area of parallelogram के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, दो एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेके उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं. सो लेट्स फाइंड ए क्रॉस बी वेक्टर फर्स्ट. ए क्रॉस बी वेक्टर कितना होगा, आई कैप, जे कैप, के कैप, and 1, minus 1 and 3, these are the coefficients of A vector. 2, minus 7 and 1, these are the coefficients of B vector, and this comes out to be I cap times minus 1, 3, minus 7, 1, then negative J cap times 1, 3, 2, 1, K cap times 1, minus 1, 2, minus 7. So this is I cap के साथ में minus 1 plus 21, minus J cap के साथ में 1 minus 6, plus K cap के साथ में minus 7 plus 2. This is 20 I cap minus 5, so plus 5 J cap and minus 5 K cap. So area of the parallelogram is magnitude of A cross B. So let's call this 1. So this is A cross B vector. इसका magnitude क्या होगा? Let's take the square root and square the components. So 20 square plus 5 square plus में minus 5 का square, which is 400 plus 25 plus 25, which is square root of 450. So this is a multiple of 25, so I can take 5 and 25 outside, so 5 बाहर गया and 25 से डिवाइड करने के बाद अंदर बच रहा है 18, and this is 15 root 3 square units. Is it correct? Let's check that. 10, 15 root 2, तो क्या गड़बड़ कर दी मैंने,
हाँ 15√2, 3 बाहर गया ना, ठीक है. Okay, you can try and factorize 450 also, right? 2 450 and we get 225. 225 15 का स्क्वायर होता है, right? ठीक है, so 3 and 75, 3 25, 5 5 5 1, and we get 3 and 5 outside. 15√2 is our result. Okay, let's continue and do the next question. 11th and 12th MCQs. So always important. You have section A which has MCQs in school exams nowadays. So vector A का magnitude given है, vector B का magnitude given है, and what is given is A cross B is a unit vector. Find the angle between A cross B. So A cross B is a unit vector. So इससे अगर मुझे कोई इक्वेशन लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? इसका मतलब है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1, राइट? ओके, एंड बाय डेफिनेशन मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B क्या होता है? इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B into sine of the angle between these two vectors. This is 1, but magnitude of A given है क्वेश्चन में 3, and this is √2/3 times sin theta is 1. So sin theta कितना आ रहा है? 1/√2, which implies theta is pi/4. So our option B must be the correct option. So and option B. So let's do the last question. So this does not look that much easy for a 1 mark question, but let's see. Area of the rectangle having vertices A, B, C, D with position vectors. So rectangle है, पहली बात given है, right? And A, B, C, D. So in the order, right? A का position vector given है, B का given है, C का given है, and D का given है. So A, B, C, and D. And position vector is given with respect to, always given with respect to origin, right? Position vector, and position vector is same as the coordinate of the point. तो A का coordinate क्या होगा? -1, half and 4. B का coordinate क्या होगा? 1, 1/√2, sorry 1/2, comma 4. C के coordinates will be 1 minus half and 4, and D के का पोजिशन वेक्टर गिवन है, एंड उसका कोऑर्डिनेट होगा -1, -half and 4. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया कि पोजीशन वेक्टर का डेफिनेशन, पोजीशन वेक्टर अगर किसी भी वेक्टर का गिवन है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, लेट्स से दिस इज ओपी वेक्टर, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी विल बी एक्स वाई जेड, राइट? ठीक है, तो यू कैन, तो ये मैं बहुत बार रिपीट किया है, एंड किसी भी चीज़ का पोजीशन वेक्टर इज सेम एज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, राइट? सो ओपी वेक्टर अगर आपके पास गिवन है, देन which is xi cap op xi cap plus yj cap plus zk cap, then you can do final minus initial, right? So 0 0 0 final point is xyz will come out to be xyz, right? So that's what I have used so to simplify my work here. And अब हम क्या कर सकते हैं, since it's a rectangle I can do this question directly, right? AD कितना होगा, डिस्टेंस फार्मूला से 1 and 1 कैंसिल एंड 4 and 4 कैंसिल, यहाँ पे कितना आएगा डिस्टेंस, आप डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लो 1 आएगा, एंड देन
डिस्टेंस फॉर्मूला से इन दोनों के बीच में निकालेंगे तो y एंड y का हाफ हाफ कैंसिल, 4 एंड 4 कैंसिल, z एंड z का x कंपोनेंट्स के बीच में डिस्टेंस इज 2, so area must be 2, right? So area is, since it's a rectangle, right, base into height, so which is 2 into 1, area must be 2 square units. But let's say ये mention नहीं करता कि ये rectangle है, so if it says इस parallelogram का area निकालो, then we will have to do the whole thing. हम क्या निकालते हैं? AB वेक्टर. AB वेक्टर कितना आ रहा है? AB वेक्टर is, so and हम AB वेक्टर निकालते हैं, let's say उसके साथ में एक adjacent वेक्टर निकाल देते हैं, let's say AD वेक्टर है, ठीक है, and we will do magnitude of AB cross AD to find the area of the parallelogram. So AB vector final point is B, so 1 plus 1 I cap, so 1 plus 1 I cap plus half minus half J cap plus 4 minus 4 K cap. So this is twice of I cap plus 0 J cap plus 0 K cap. Similarly, AD vector is, so A to D, final point is D, so this is minus 1 plus 1 I cap plus minus half J cap plus 4 minus 4 K cap, and this comes out to be 0 I cap minus 1 J cap plus 0 K cap. And area of parallelogram या area of rectangle, ठीक है, area of parallelogram, and rectangle is also a parallelogram, so it is a magnitude of AB cross AD. So but what is AB cross AD? So AB का cross product with AD vector is IJK. So AB के components were 2 0 0, AD के components are 0 minus 1 0, and we find this to be I cap के साथ में 0 0 minus 1 0, J cap के साथ में, so minus J cap के साथ में 2 0 0 0, and plus K cap के साथ में 2 0 minus 1, sorry 0 minus 1, and we get 0 I cap, 0 J cap and minus 2 K cap, and magnitude कितना आएगा इसका? 0 square plus में minus 2 का square, which is 2 square units. Same result. So you can do the whole thing, but MCQ है. So I just use the distance formula, right? कि इन दोनों के बीच में distance 2 है, 1 है, rectangle का area कितना होगा? Base into height, so 2. Okay, so that completes this exercise. So notes will be available below the video, and make sure to like, share and subscribe.